माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, short duration discussion. Honorable members, notices have been received from the following members to raise a discussion on the economic situation in the country. Shri Derek O'Brien, Shri Mohammad Nadimul Haq, Shrimati Mosam Noor, Dr. Sashmit Patra, Shrimati Sulata Dev, Shri Niranjan Bishi, Dr. Sudhanshu Trivedi, Shri Rakesh Sinha, Shri Brajlal, Shri V. Vijayasai Reddy, Shri Masthan Rao Bida, Shri Ayodhya Rami Reddy, Shri Birendra Prasad Vaishya, Shri Ghanshyam Tiwari, Dr. Lakshmikant Vajpayee, Shri Sushil Kumar Modi, Shri Aditya Prasad, Shri Shambhu Saran Patel, Shri Derek O'Brien. Thank you very much, sir, for allowing this discussion on an important subject to be taken up. Sir, a short duration discussion is a time where opposition MPs get a chance to express ourselves. And we thank you not only for taking this discussion up, sir, because there is a tradition here to take one short duration discussion every week. Not only have you taken this discussion up, but the normal time for this discussion is 2.5 hours. And I've just noted that it's actually been expanded to 4 hours. So we appreciate that. And if this short duration discussion on an issue which is primarily put up by members of the opposition and of course, and of the treasury benches. So I think it will go a long way in having a house running. You wanted to run 100% without any disruption. Let me, on behalf of my party, the Trinamool Congress, and I'm sure many of my colleagues from other parties on this side share the view, not 100%, sir. Till 22nd December, we'll make it run for 102%. And give us one short duration discussion next week, where I'm told that over 100 MPs from 12, 13 different political parties want to have a discussion on the steps to be taken to strengthen cooperative federalism. We want to discuss this, sir, in a meaningful way. Now, on this subject. Sir, elections come and go. Some win, some lose. Sir, but the real winner after every election, besides, of course, the parliamentary democracy, are the people. And on the subject, sir, on the economy, which is the subject of our discussion, how is the economy looking? And I think it depends on whose eyes are you looking through. If you're looking at the economy this morning when you get up, and if you're into the stock market, you should be very happy. Some 69,000 in the stock market. Should be very happy. If you're looking at the economy through the eyes of the billionaires, you should also be very happy. And we have nothing against billionaires. May their tribe increase. From 142 billionaires in India, 3 years number is now 169. Good. If you're looking at the economy through the eyes of the richest 1% of everyone in India, you should also be happy, because the richest 1% control some 40% of the total wealth. And since the finance minister is here, and thank you, ma'am, for being here, because
whenever we try and have some meetings with ministers, with our state government, the Minister of State is sent to meet us. So I really appreciate that the Minister herself is here. If you're looking at it through the eyes of the Finance Minister, you should also have not a bad Tuesday afternoon, thinking that the GDP is projected to grow at, or had 7.6% in the second quarter. Sir, but if you look at the economy through the eyes of any family anywhere in the country, what will those eyes looking at the economy tell you, sir? Those eyes will tell you that from 2014 to 2023, the price of rice has gone up by 56%, the price of wheat by 59%, milk by 61%, tomatoes by 115%, or tur dal by 120%. Gas now has come down, but before the elections it came down. And there is a saying in Bangla, sir, Hajar takai ranna hocche bina poishar chal. You must have picked up some Bengali. Hajar takai ranna hocche bina poishar chal. In other words, the Prime Minister is giving you the gas, which is 1,000 rupees. The rice is free, but the gas is 1,000 rupees. Sir, if you look at this economy, and this is somebody I actually met, her name is Nupur Hati. She's from Hooghly district. Nupur Hati clutches on to her laminated job card because she hasn't received her Manrega wages. Or look at the economy through the 21 lakh workers who, like Nupur Hati, has worked, but it's been 2 years, even though she was guaranteed 15 days, she has not received these wages, adding up to some 15,000 crores. That's only one state. If you take all states, the number will be more. Or if you look at this economy through the eyes of any young man or young woman and the economy, and he or she will tell you that 25% of youth unemployment. So through you, sir, I ask this government, has this wealth which has been created, has it been passed on equitably? Has it been passed on equally? And that's the point today, sir, of what we are discussing. Yes, you have your moments, give us all the numbers, but has it gone to the bottom of the pyramid? And that's the single point today, sir, of what I am trying to say. And tell us, Madam Finance Minister, rural inflation higher than urban inflation for the first time in 6 years. And this is not election rhetoric. These are hard numbers. Household savings depleting. It is at a 50-year low in 22-23. Farmer welfare. We have to ask ourselves, why are 150 farmers committing suicide every day? Sir, yes, let the stock market go up, let the billionaires go up, sir, but spare a thought, or more than a thought, for the marginalized, for the vulnerable. India has the world's highest number of poor people at 23 crores. This is what this debate on the economy should be about. The bottom 50% of our population possess only 3% of the wealth. Sir, and on a Tuesday afternoon in this plush-looking glitzy building, we must remind ourselves why 3 out of 4 Indians cannot afford a healthy, balanced diet. Or, worse still,
why 2 out of 3 children in India under the age of 5 die of hunger. Sir, this is not the time to talk about what happened 70 years ago and what happened 60 years ago. That's why, without doing any politics, we are presenting some numbers, and we want the government to address these issues and find solutions to these issues. Many promises have been made. I'm not going there today because on the promises and the delivery, I want to stick very, very clearly with the economy. Sir, the point which I make on this last... But I'll give you more time. Thank you. Continue. Time allotted was I've got 12 3 minutes. minutes. They told me 12, so I don't know. No, 12 is there. 12. 12 is over. But continue. So while on the subject, nothing to do with this, you know, it's difficult for us to see the time because the timers are behind us. I'd request you to You had give made us... a suggestion. We are doing something about it. Thank you, sir. Sir, then let me conclude. Because we have to look at the priorities of this government. I started off my story with elections. Who wins? You win. Yes, BJP, you win elections. It's another matter when you fight us, you don't win elections, we win elections. So let's compare equals. You win, we win. You have an outlook on the economy. Mamata Banerjee's Trinamool Congress has an outlook on the economy. What's the difference in the outlook? So 1, 2, and 3 points. Indian economy is expected to grow at 7% in the current financial year. Bengal growing at 8.4% in the current financial year. I want to leave these numbers here because when we are doing this growth in Bengal, it is not a divisive growth. It is an inclusive growth. Everybody has taken along. And so let me just finish, then you can share. I'm just in the middle of a thought. It is because you had a good governor for 3 years. Go ahead. Yes, sir. Let me confirm, sir, that's the only reason all this happened. I only don't want to add 3 points. So I gave you the growth number. I want to take one other number of one social sector view. On our view, the Trinamool view, because they win and we win, and the BJP view. And I'll give you one more economic number, sir, and then I'll give you the social sector. On the All India Index of Industrial Production, national average 22-23 is 5%, and Bengal's growth on this has been 8%. So this is the economy. And I'll end with one more example. As I said, it's just one example on the outlook. You have your Beti Bachao program. And in the outreach for that program, about 80% of your budget for the program is for publicity and advertising. My question is, will this government and the answer tell us how many women's lives were actually touched by this program? In Bengal, which the United Nations acknowledged, we have a program called Kanyashree. If you ask me how many lives were touched, I will give you an exact number. 78 lakh women benefited. Sir, I'll conclude by saying that yes, you win, we win. You have a view on the economy. We have a different view on the economy. And there's even another very, very big difference between who you are and who we are, because we also believe that no one can worship God either in a mosque or in a church or in a big temple, or love his neighbor on an empty stomach. Thank you, sir.
Honorable members, I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Sudhanshu Trivedi. माननीय 25 सभापति minutes. महोदय, Dr. Trivedi, 25 minutes. Your time starts there. Go ahead. माननीय सभापति महोदय, आज हम देश के आर्थिक विषय के ऊपर विचार करने के लिए इस सदन में एकत्र हैं और मैं आशा करता हूं कि अर्थ के इस विषय के ऊपर सार्थक चर्चा से कोई सार्थक निष्कर्ष हम तो हमें अधिक बेहतर और सार्थक पक्ष नजर आएगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013। मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की 1.5 है %, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। अब ये अक्टूबर 2023 का है और इतना ही नहीं मान्यवर, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है, वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में जब अगर IMF ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं है, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, पीएफ में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था। तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। वहां पे लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, मगर हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया था द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी जी टू कम इनटू पावर। और आज अगर हम देखें तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है? पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 4%, इसका मतलब हमारी कितनी इसमें फॉरेन की वैल्यू बची है? मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब ये सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में
ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मानी बात है, वो 7.5 करोड़ कोई धनाढ्य करोड़पति अरबपति नहीं है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की इकोनॉमी कौन राइज करेगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत एशिया की इकोनॉमी का इंजन बन के उभरेगा। मैं एक और डाटा अभी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है, उसने आंकड़ा दिया कि वर्तमान दीपावली का जो फेस्टिव सीजन गुजरा है और छठ का मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग हुई है, जिसमें छोटे सामान खरीदने से लेके घरेलू सामान खरीदने से लेके बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों में अगर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग भारत की जनता ने की है, तो कहीं ना कहीं ये अंधकार से निकलते हुए दीपावली के समान एक नई ज्योति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक संकेत भी दिखाता है। और मुझे यह भी याद आता है मान्यवर, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, एक दौर था जब भारत का 91 की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था। 2-2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था। लोगों को याद होगा जुलाई अगस्त की बात, तो एक 91 की दिवाली थी, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक ये भी दिवाली है जब महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम केवल कुछ आंकड़ों को देख लें कि हमारे बारे में दुनिया के जो बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर कहता है, एज चाइनाज इकोनॉमी इज स्लोइंग, द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू पावर अहेड द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ लीडिंग ग्रोथ इन द रीजन। मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो पहले कहता था, द फेमस मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट इन जनवरी 2014, जिसमें उसने कहा था कि इंडिया हैज फॉलन इनटू फ्रेजाइल 5। और द सेम मॉर्गन एंड स्टैनली इन अक्टूबर 2013 कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एट इट्स मोस्ट प्रिफर्ड इमर्जिंग मार्केट एंड इंक्रीज इट्स ओवरवेट स्टांस इन इंडियन इक्विटीज। यानी वही जो कहता था कि हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पे है, वो अर्थव्यवस्था अब हमारी उभरने के कगार पे उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर एंड देयर आर ओनली अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज यूएस एंड इंडिया, सेज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। A working paper released in April 2023 says, stacking up the benefits lessons from the Indian digital journey. इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने भारत को एक नए स्वरूप में पहुंचाया है। और इसीलिए यह कहा है आईएमएफ ने कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यह केवल ऐसे ही नहीं हुआ है। अगर आपने देखा कि लास्ट मंथ में फिच ने अपनी रेटिंग भारत की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 5.5 से बढ़ाकर 6.2 कर दी और चाइना की 5.2 से घटाकर 4.5 कर दी। इसीलिए मैं सिर्फ मेजर इकोनॉमी से कंपैरिजन कर रहा हूं। यह दर्शाता है कि दुनिया किस हालात में है और मोदी जी के नेतृत्व में हम किस हालात में हैं, इसे समझने की जरूरत है। और यह क्यों हुआ? क्योंकि हमारी वित्तीय नीतियां बहुत सार्थक और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बजट में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। रेल, रोड, पोर्ट्स बने। गरीब कल्याण के लिए चाहे 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान धन देने की जरूरत नहीं, मैंने कहा अनाज देने की जरूरत पड़ी। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इसकी क्या जरूरत थी। मान्यवर, जब सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी, अगर आप किसी को पैसा दे देते तो वो चीज की व्यवस्था करता कहां से, इसलिए वो अनाज पहुंचाने की व्यवस्था थी। और अगर हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो अक्टूबर में 58.4 हुआ है, जो कि सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट है पिछले 13 वर्षों में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 28 कंसेक्यूटिव मंथ में वो बढ़ता हुआ 50.5 है अक्टूबर 2023 में। और डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में 11% की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर 2023 में। अब मैं अपने विपक्ष के सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही है तो मानी हुई बात है अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा होगा। इसी कारण से यह दिखाई पड़ रहा है। सितंबर 2023 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.8% की ग्रोथ के साथ लगातार ग्रोथ कर रहा है, जो अगस्त के अनुसार
अगस्त की तुलना से अगर पूरे देखें तो विगत 14 महीनों में सबसे अधिक है। अब अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो अक्टूबर में 9.43% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा हुआ है, जो यूएस डॉलर 62.26 बिलियन के आसपास पहुंचा है। सर्विसेज ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट में हम 22% की वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अक्टूबर 2023 का डाटा है। परंतु हम आए किस चुनौती से, यह भी ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती ये थी कि उस जमाने में जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैंकों को जो लोन दिए गए थे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एनपीए 2014-15 के टाइम में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अब आईएमएफ प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया की ग्रोथ भी आगे बढ़ रही है, हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं इस संदर्भ में कोट करना चाहता हूं। मान्यवर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार, बाद में हमारी सरकार में भी रहे, 2018 में अपने एक साक्षात्कार में रघुराम राजन जी ने कहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बॉम्ब ऑन मोदी वन रिजीम, इवन दो द राजन सेड दैट द लेंडिंग banks of 2006 to 8 was the origin of the bad loans which was in रघुराम राजन जी ने कहा कि 2006 से 8 के बीच में जो बैड लोन्स दिए गए, उसके लिए भले ही आज, और ये नवंबर 2018 को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है, उसमें आया है। इसलिए हमने आज स्थिति ये की कि जन जन तक उस धन को पहुंचाया, उसको सुरक्षित किया और जन कल्याणकारी कार्यों में उसको स्थापित करने का प्रयास किया। और आज आप देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्जित किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। यानी कहां वो बैड लोन्स में दबे जा रहे थे और कहां वो रिकॉर्ड प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जिसके बारे में भी मात्र चंद महीने पहले की तो बात है, जो कहा जाता था कि साहब ये खराब हो गया, डूब गया वगैरह वगैरह, आज स्थिति यह है कि एसबीआई हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द इंडिया एंड एज पर द रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2033-34 SBI has earned a profit of 18,537 crores। यानी ये जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों के हिसाब से ये सबसे अधिक आया है। और कहां हम कर्ज के अंधेरे में डूबे थे और आज मोदी जी ने उसे कर्ज के अंधेरे से निकालकर बैंकिंग व्यवस्था को जन कल्याण के सवेरे तक लाने में सफलता हासिल की है। और अगर हम पिछले समय में देखें तो ट्विन बैलेंस शीट जो बैंक्स एडॉप्ट करते थे वो अपने आप में एक समस्या थी, परंतु वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया, उस कारण से अब ये ट्विन बैलेंस शीट एक नए समाधान के रूप में आगे बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो हम 2 लाख करोड़ रुपए के वर्थ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत 1500 से अधिक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का केंद्र बनता जा रहा है। नाउ मैं ये कोट करना चाहता हूं कि इंडिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड लोकेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल सर्विसेज, ये डेलॉयट ने 2003 में कहा है। और हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को रिपील किया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस के कारण जो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो समाप्त हुई। और जहां तक गरीबी और पॉवर्टी की बात करते हैं तो यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं, द रिलेटिव रिडक्शन फ्रॉम 2015-16 टू 2019-21 was faster, it is 11.9% year as compared to the previous time। यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद गरीबी उन्मूलन बहुत तेज गति से हुआ। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और आईएमएफ का ये कहना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाज मेंटेन बिलो 1% इन 2022 बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यानी वो साफ मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई, उस कारण से जिसको हम गंभीर कहते हैं, गंभीर गरीबी कहते हैं, वो 1% से नीचे पे आई है। अब आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने अभी कहा है, एक साल पहले उन्होंने कहा, इंडिया डिजर्व टू बी कॉल्ड द ब्राइट स्पॉट एंड अदरवाइज द डार्क होरिजन बिकॉज इट हैज बीन द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम and most importantly this growth is underpinned by structural reforms। यानी आईएमएफ चीफ ये बात की तस्दीक कर रही हैं
कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आधारभूत संरचनागत परिवर्तन हुए, उसी कारण से भारत एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, उसको देखते हुए भारत ने तुलनात्मक दृष्टि से महंगाई पर सबसे बेहतर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मिस्टर नोएल क्विन, हु इज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द HSBC, और ये उन्होंने 2022 में कहा। मैंने इसीलिए सिर्फ वो बातें कोट करने का प्रयास किया जिनके की द्वारा ये समझा जा सके कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की इन चुनौतियों में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यह भी एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। मैं एक कोट करना चाहता हूं, एक नोबेल प्राइज विनर हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिज नेम इज माइकल स्पेंस, जिन्होंने 2022 में कहा, कोट, द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ regime change today. India is outstanding performer now. It's a powerhouse of digital and life science realms. It is thriving digital ecosystem, and India is instead a digital system replacing existing retail systems. Entrepreneurs, companies, and are building solution to integrate existing and sometimes very small retail business into a digitally enabled supply chains, making them more effective. अर्थात विश्व का जो आधुनिक सप्लाई चेन व्यवस्था है, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने एक बड़ा परिवर्तन लाने की स्थिति बनाई है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि गरीब के पास जरूरत पड़ने पे जीवन की आवश्यकताएं भी रहीं, विकास के नए सोपान भी बनते रहे, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, 90% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हो, भारत चीन सीमा के ऊपर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो भी किया है, कोविड वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध कराया है। और इसके बावजूद आज पहली बार ऐसा मौका है जब G20 और G7 कंट्रीज में हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ईमानदारी से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये जानते हैं क्यों हुआ है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति उन्होंने समझा कि उनका धन को किस मार्ग से व्यय करना चाहिए। मैं कोट करता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो, उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है, उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कहा जाता, दिस इज द हिंदू ग्रोथ रेट। ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर। मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब ये 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैव योग माने, मान्यवर जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? ये सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है। एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है। वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था। हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे। और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ।
90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंबे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के छूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रहाई, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इसलिए जो जो हम धनात धर्मात तथा सुखम की दृष्टि के साथ संपत्ति बढ़ते गए, वहां इस देश में संपत्ति आती गई। ऑन द लाइटर नोट एंड ऑन द सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने और मां लक्ष्मी की कृपा इस देश पे बनी रहे, पर मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है कि दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में मैं अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो गया। जनाब, हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है, मगर क्या कह रहे हैं बीच वाले, अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा अपनी सरकार की तरफ से, और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और फिर मैं एक बिंदु और कहकर, एक पंक्ति और कहकर बात को समाप्त करता हूं। G20 में जो लोगों ने देखा उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब हमारे साथी समझ पाए न समझ पाए, भारत की जनता उसे समझ रही है और वो उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे आ रही है जो नए भारत का स्वप्न मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। श्री पी चिदम्बरम सर, 10 minutes. Thank you, sir. More than enough. So after listening to the learned professor of Lucknow University,
I'm sure that all of us are convinced that Amrit Kal has begun. And by going the number of times he was applauded by the treasury benches, I think he should be in line for the ministership now. I wish him well. If all is well in the world and God is in his heaven and India is growing at the fastest rate in the world, why is the impact of that growth not felt on the ground? This is the question which my friend Derek asked, and I try to supplement that in the few minutes I have. We are a large economy. We are growing at the fastest rate in the world. We are innovative. We have the largest FDI coming into the country. But why is it not seen on the ground? And I specifically want to ask, why is it not seen in the inflation numbers and the unemployment numbers? Let's take only those two. Now, what are the unemployment numbers? And I'm going by official numbers. The government doesn't like the CMIE numbers, so we'll avoid the CMIE numbers. Mercifully, the BJP no longer talks about 2 crore jobs being created every year. Thank you for small mercies that you're not making these tall claims. That's one of the election jumlas. I didn't know the word jumla unless I heard it first from the Honorable Home Minister. Now let's focus on a few numbers. This is official numbers of the Periodic Labor Survey. The worker population rate in this country is 46%, which means the number of workers to the population is 46. It's quite low, but let's take it as acceptable given the various circumstances of the country. Of the worker population, that is 46% of the total population, male worker population is 69%, but the female is only 22%. Of the worker population, less than 50% actually work. So if you apply 50% on 46%, effectively it means only that 23% of the people work. This has more or less been constant in the last 9.5 years of the BJP government. Now, why, I ask, if we have such scintillating growth, why is this numbers not improving? Now, my learned friend Derek O'Brien gave the numbers. In the age group 15 to 24, the unemployment rate is 23.22. Among graduates under the age of 25, the unemployment rate is 42%. Graduates between the year 25 to 29, it is still 23%. Graduates between the years of 30 to 34, it is close to 10%. It's 9.8%. A graduate in this country, and I spoke at a college, I said, I'm not frightening you. We will graduate here. But unfortunately, 1 out of 4 will be unemployed. And even until the age of 35, 1 out of 10 will be unemployed. Why is this spirited growth, scintillating growth, not turning into jobs? That's the first question I'm asking.
And keep in mind, most employment in this country is self-employment, 57%. Regular wage employees has declined from 24% to 21%. Apart from the quantity, the quality of employment is also poor. So I want the government to answer, why is this 10-year splendid period not reflecting in employment figures? The second one is about price rise. And on price rise, yes, inflation has come down in the last couple of months. I'm not disputing that. But please remember that even today, the CPI inflation is above the tolerance limit of 4 to 6% of the RBI. Food and light inflation is 4.3. Fuel and light inflation is 4.3. Food inflation is 9.2. What does the combination of high unemployment and high prices, what does it mean? It means that, and I think Derek hinted at that, it means that there is a cut, the impact will be felt in the cut in domestic consumption, cut in household consumption. The impact is you borrow more. Credit growth is driven in this country, according to the RBI, on personal loans and gold loans. The net financial assets of households has plummeted to the lowest level, 5.1%. What does this mean? It means that people are consuming less, people are borrowing more, they are liquidating their household assets and savings, and the net financial savings has come down to a historical low, a 50-year low of 5.1%. It also shows up elsewhere. It shows up, for example, in matters like child malnutrition. I'll just give you the numbers of child malnutrition, and are shocking numbers. They're shocking numbers of child malnutrition. Today, among children, you will find that 16.3% of children are undernourished, 19.3% of children are wasted, 35.5% of children are stunted. It shows up again in the food that the children get. And add to that Derek's numbers, under the age of 5, so many people die because of hunger. Why is it not showing up in consumption? It also shows up in education. Their mental growth. Today, in a class 8, only 70% of the children can read a class 2 text. And only 45% of children can do basic arithmetic. In class 8, you can't do basic arithmetic, you can't read a class 2 text. So ultimately, the question is, who is this government for? Is it for the poor, or is its policy so skewed that it is favor of the rich? The numbers are undisputed. I have not seen a single government spokesman dispute these numbers. 23 crore people of India are poor when the poverty bar is very low. Poverty bar is 1,286 rupees per month per person in urban areas and 1,089 rupees per month per person in rural areas. With such a low poverty bar, 23 crore people are poor. And it shows up in inequality. The bottom 50% owns 3% of national wealth and gets 13%
gets 13% of the national income. And the top 5% owns 60% of national wealth, and top 1% holds 22% of the national income. So ultimately, this growth is unacceptable. This kind of growth is unacceptable. We need more balanced growth. But then I end with the final question that I've been asking the government for many, many months, for which I have not got an answer. I hope I will get an answer today. In 91-92, India's GDP was 25 lakh crore. In 12 years, in 2003-4, it doubled to 50 lakh crore, doubled. In 10 years, under UPA, it doubled to 100 lakh crore, 25 to 50 to 100. I ask one simple question. If you are growing at such a fast rate, such a record-breaking rate, will you 100 lakh crore? The finance minister, honorable finance minister knows the answer. I know the answer. You know the answer. But I want the honorable finance minister, to say the answer whether the is economy, the answer is known to the finance minister, the former finance minister. I'm out of it. whether the GDP will double in their Amrit Kal period under the NDA government. Will it grow to 200 lakh crore by March 2024? And I want the honorable finance minister to answer that question. Thank you, sir. Dr. Kanimoji NVN Somu. Honorable Ma'am, Chairman, sir. 9 minutes. Yes, sir. Honorable Chairman, sir. I'm wondering the timing of the discussion on the economic situation in the country. In today's business, Hindu business headlines, we had a headline stating that Indian banks writes off rupees 10.6 lakh crore in 5 years, and 50% of that has been linked to the large corporates. This is how the corporates gets their freebies, is one thing which we have to make a note. The India's DGP crosses $4 trillion for the first time. Sir, there is no doubt the Indian economy is growing. India is set to outpace Japan and Germany shortly as the fastest growing economy in the country. And the government also claims that the GST collections has touched a record high, but always Tamil Nadu has got the brunt of not getting it back what we give it to the Indian government. But the pertinent question of whether the fruits of the GDP growth has reached the India's poor and lower middle class. No, the government has failed miserably in managing the economy. What is the use of boasting that India's foreign exchange reserves have increased? Indian economy grows faster than US economy with 7.6% GDP growth when 80% of the population is suffering in poverty. It's not a boon, it's a curse. US is 37.5 trillion economy with a population of 33 crore, but India's population is 142 crores. In terms of per capita GDP, India ranks 139th in the world, and India's external debt is 172 lakh crores. India has witnessed a surge in private debt, especially in the corporate and the household sectors, due to the easy credit availability and low interest rate. During the UPA's 10-year rule, only rupees 2.20 lakh crore was written off. For a kind information, as of now, the Indian banks have written off as rupees 10.6 lakh crore in the 5 years. However, this also possesses a risk of default and financial instability, especially of the income growth slows down or 6% of national income in 2019
up from 37% in 1980. Similarly, the top 10% of wealth holders owned 77% of total wealth in 2019, up from 66% in 2000. High inequality can lead to social unrest, political instability, and lower economic growth. Unemployment rate has touched 10%. The unemployment of youth aged between 18 to 25 is touched abnormally low to 25%. Only a very small percentage of people are lucky to get a regular employment in government and private companies. Sir, more than 40 lakh government jobs are vacant, and the government has promised to create 2 crore new jobs every year, could not fill even 10 lakh vacant jobs. Too much emphasis on privatization of government and public sector companies will destroy the social structure of the country. The reservation system followed in our country is indispensable for upholding social justice and removing inequality. Reservations are not provided any private sector, and if the governments keep on privatizing the reservation system, will derail and the social justice and equitable distribution of wealth is under threat. Therefore, I urge the government to introduce a bill to provide reservation in the private sector before it sells everything. This government behaves like a good salesman, but not a good Samaritan. The economic disparity and the social inequality is witnessing a worst phase in independent India. When the world thrives on dollar economy, the continuous fall in the value of Indian rupee against US dollar can do a lot of bad than good. My senior colleagues in treasury benches criticized vehemently the then government's failure to provide a stable rupee in 2013. You have promised to people of India that when you come to power, you will stabilize the value of Indian rupee against US dollar and bring the value of one US dollar to rupees 40. What happened after your government captured the power in 2014 is a history known to everyone. Our Honorable Finance Minister has even said in public Indian rupees falling, only US dollar is raising. This is a candid statement accepting the failure of the government to stabilize the value of Indian rupee against the US dollar. Due to the extreme rupee-dollar rate fluctuations, India's nominal GDP affects badly. The export gain is lost by a mile through import loss. The value of India's import is much higher than export. The widening gap in trade deficit is not good for any country. India is no exception. Our country's trade deficit with other countries, especially China, is going to affect the Indian economy very much. Too much dependence on imports from China will destroy the prospects of indigenous manufacturing and development. I think the warning bell is ringing. It's a wake-up call for the government to reduce the country's over-dependence on China in importing. Another time bomb of our country is facing at the moment is the escalating prices of the essential commodities and food items. The World Economic Forum predicts that the cost of living crisis sparkled by fluid and food price hikes will hit women the most. The rising prices have hit almost everyone, either it be a milkman, a fish vendor, a auto or a taxi driver, or the pensioners. All are affected very badly, but the union government is still having a blind eye to the precarious situation in the country right now it is in. Transportation cost has gone up by 20 to 30% due to the steep hike in the prices of petrol, diesel, and CNG. It is causing a ripple effect on the vegetable prices. The steep hike in the CNG prices had made life miserable for the auto and cab drivers. CNG is now sold over rupees 69 per kg. We demand the government should provide rupees 35 per kg subsidy on the CNG so that they can survive. The agriculture sector is the backbone of our country. Nearly 70% of the total population thrives on agriculture and agro-based activities. The government once claimed that it will double the farmers' income has done too little to save the life of the farmers of this country. The increasing incident of farmers committing suicide is a national shame. The government should address the needs of the farmers as a top priority because the whole country depends on them. If the government can't stop its farmers committing suicide, if the government can't uphold social justice and socio-economic equality, if the government cannot control the escalating prices of essential commodities, if the government can't provide employment opportunities for one-third of its youth population, if the government can't provide affordable health care to its poor citizens, there is no point in boasting that our country is fastest growing economy in the world. Sir, among the Indian states, Tamil Nadu is the second largest economy and third largest exporting state, contributing 9% to the India's net exports. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin,
The Industries Department of Government of Tamil Nadu is taking several proactive measures as several foreign companies interested in signing agreement with TIDCO, an industrial arm of the Government of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 179 projects at a cost of rupees 8.6 lakh crore relating to Tamil Nadu has been included in the National Infrastructure Pipeline. These projects will be implemented in the next 5 years. Thus, Tamil Nadu is emerging fast as a champion economy and advanced industrial state in the country. I urge the government to allocate adequate funds and to provide all necessary support to Tamil Nadu to release an unprecedented growth and pinnacle of success in economic growth, industrial development, and employment generation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji ji. Dr. Ashok Kumar Mittal ji, 9 minutes, 9 minutes. सभापति महोदय, आज मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक हलवाई का बेटा हूं, एक दुकानदार का बेटा हूं। तो मैं आज जो इस पर चर्चा करूंगा, एक अर्थशास्त्री होने के नाते नहीं, एक आम आदमी पॉइंट के हिसाब से मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। मुझसे पूर्व मेरे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ऊपर है, हमारा किसान खुशहाल है, युवा को रोजगार मिल रहा है और देश का विकास हो रहा है। लेकिन मैं वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को एक आम आदमी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा 4 पंक्तियों में। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, बाकी खर्च हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पर। समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं देश की अर्थव्यवस्था पर। हमें सिर्फ फिगर्स नहीं देखने, हमें फैक्ट्स भी देखने होंगे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ 80 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सुविधा अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाई। बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें कि ये जाहिर करता है कि अभी तक 80 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर नहीं आ पाए कि उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। हम ग्रोथ को जीडीपी से एक्सप्लेन करते हैं, जीडीपी का, लेकिन एक आम आदमी का क्या मतलब जाता है? गैस, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि इसी से उसका घर चलता है और इन सब की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमने G20 का बहुत सफल आयोजन किया, ये गर्व की बात है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121 देशों में से 111वें नंबर पर आते हैं। भारत सरकार का मिशन है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व भी कम हो तो हम रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था जो भी मेरे हिसाब से 5 बुनियादी तत्वों से बनी है। सबसे पहले मैं दुकानदार भाई की बात करूंगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ऊपर दुकानदार परिवार है, 10 करोड़ से ऊपर। उनके साथ साथ मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूंगा, जो हमारी 10 करोड़ से ऊपर महिलाएं, बहनें, माताएं सेल्फ ग्रुप चलाती हैं, 20 करोड़। दूसरी तरफ यहां हम जाएं, चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और वहां पर 90% वस्तुएं चाइना की बनी हुई बिकी। मुझे समझ नहीं आता कि मेक इन इंडिया में हम अभी तक क्यों पीछे हैं। सिंपल आंकड़े बताते हैं, भारत चाइना से 57.5
$51 बिलियन का इंपोर्ट करता है और सिर्फ डॉलर $57 बिलियन का इंपोर्ट करता है और सिर्फ $9 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे समझ नहीं आता ये हमारी कैसी आत्मनिर्भरता है। मल्टीनेशनल अमेज़न और दूसरी कंपनियों ने भारत में आके हमारे दुकानदार भाई, हमारे सेल्फ ग्रुप वालों का बुरी तरह से प्रॉब्लम में ला दिया है, क्योंकि यदि वो कोई भी सामान इनके थ्रू बेचते हैं तो 30% कमीशन हमें अमेज़न को देना जाता है, जो कि विदेशी कंपनियों के विदेशों में जाता है। हमारा दूसरा तत्व है किसान भाई। हमारे भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कर रही है और काफी कुछ कर रही है, बट दूसरी तरफ अभी कल ही होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जारी किए और उसमें भारत में पिछले वर्ष 2022 में 1,70,00,000 सुसाइड हुए, जिसमें से 50 से 60 हजार किसान भाइयों के या हमारे मजदूर भाइयों के। वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसे क्यों मजबूर हो रहे हैं? आउटस्टैंडिंग लोन्स, इन सब बातों की वजह से। और हर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पर 74,00,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन है। तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। हमारा तीसरा तत्व है हमारे युवा। हम यंग युवा, हमारे यहाँ यूथ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड लग रहा है कहीं हमें डेमोक्रेटिक डिसास्टर ना बन जाए। उनके लिए हम रोजगार के उतने अवसर पूरे नहीं कर पा रहे। बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, 8% हो गई है और हमारे युवाओं को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और साथ साथ इसके हमारे इंटेलिजेंट लोग बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अब मैं चौथे तत्व पर आऊंगा, मजदूर वर्ग। देश की अर्थव्यवस्था का मूल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम हमारे मजदूर भाई ही करते हैं। 2019 में मनरेगा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें बताया गया कि 71% मजदूरों को कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 54% मजदूर भाइयों को पेड लीव नहीं मिलती और ग्रामीण क्षेत्रों में 77% और शहरों में 80% मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। और हमारा पांचवा तत्व आएगा एमएसएमई या हमारे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। भारत सरकार जॉब क्रिएशन की बात करती है, लेकिन हमारे कितने उद्योग बंद हुए? 19,000 से ऊपर एमएसएमई 2021 और से मार्च 2023 के बीच में बंद हुए हैं, जिससे तकरीबन 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इन सब चीजों को मैं चाहूंगा मंत्री महोदय ध्यान दें और कुछ मैं सजेशन देना चाहूंगा कि हमारा देश एक महान देश है, हमें क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम सुपर पावर बन सके। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। कृषि को सोशल सर्विस ना बनाएं, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे उसको हम आत्मनिर्भरता भी किसानों में पैदा करें। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आएगा किसान भाइयों को के लिए एमएसपी गारंटी के लिए सरकार कानून बनाए और उनको प्रॉफिटेबल बनाए और उनको सस्टेनेबल बनाए। दूसरी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। एक जमाने में हम सुपर पावर कहते थे, हमने तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को दिए, जबकि दुनिया में विश्वविद्यालय हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमारा सिर्फ एजुकेशन पर खर्चा 2.8% है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाकर 5% किया जाए जीडीपी का। बाकी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, उसमें यदि मैं चाहूंगा सरकार जो कैसे उसको डिवाइड कर सकती है अमीरों और गरीबों में, सो दैट जो सभी वर्ग को पूरा जो देश की तरक्की का पूरा हिस्सा मिल सके। और अगली बात मैं चाहूंगा अपने दुकानदार भाइयों के लिए कि सरकार उनके लिए कानून लाए जिसमें सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल और अन्य तरीके से हम उनकी सहायता दे सके। मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री जी
इस पे पूरा ध्यान देंगे। और मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा कि सरकारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े भ्रमित हैं, ये दावे किताबी हैं, बड़ी हैं दूरियां अब तक अमीर और गरीब में, किसी के कुत्ते पर कोई भी कपड़े बेहाल है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, माननीय सुजीत कुमार। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, at the outset, I would like to congratulate our countrymen because recently we reached the $4 trillion economy benchmark for the first time. And sir, we have become, it's well known that we have become the third largest economy by purchasing power parity index and the fifth largest economy by market exchange rate. Sir, we have amply demonstrated to the world our inherent strength facing the twin challenges of the Russia-Ukraine conflict and also the COVID challenges. Sir, we are all set to achieve between 6.2 to 6.5, 6.8. We can debate on the numbers, but very healthy growth numbers in FY 23-24. Fastest growing economy. Many speakers have already spoken about it. We are the fastest growing large economy in the world. And sir, we also are very likely to become a $5 trillion economy by 2027. And sir, if the dots are connected well, the economic dots are connected well, then we, by the end of the Amrit Kal, by end of 2047, we will be a developed economy as well. Sir, now this is possible, sir, if, as I said, we connect all the economic dots properly. But in my view, sir, there are three things that the government needs to focus on to achieve these goals and the vision. Sir, first and foremost, fulfilling the aspirations of our citizens, particularly our youth and women, and I'll elaborate on it at length. Secondly, sir, boosting the MSMEs. Sir, today, Honorable Member Lakshmikant Bajpayee also during 0 hour spoke about the need to protect and support our MSMEs. And sir, I'll second him. I cannot agree with him anymore. Sir, we need to strongly boost our MSMEs and give impetus to our job creation and entrepreneurship. And third and foremost, sir, is the need to focus on education, innovation, and R&D. Sir, in her budget speech, Honorable Finance Minister also gave priorities to these three areas that I have just referred to. But, sir, I do find some lacuna, and I'll talk about it, sir. So let me go to the economic empowerment of our youth and our women. Sir, the Honorable Prime Minister spoke of 4 castes recently during one of the election speeches. He spoke of youth, women, farmers, and the youth, and the poor, sorry. Sir, let's come to the youth. We are the most youthful nation in the world. 2/3 of our population is under 35. Half of our population is under 25. When Honorable Member Ashok Mittal was speaking about the demographic dividend turning into demographic disaster, so that's a reality. That's a genuine concern that we have today. We need to take care of our youth, job creation, unless we want to see a demographic disaster. So talking of empowerment of women, sir, female worker population ratio is only 22%, which Honorable Member Chidambaram was talking about. Sir, I would like to refer to a model of women empowerment from my state of Odisha, sir, where 70 lakh women have been economically empowered over the years, and the self-help groups that they were part of are now becoming SMEs, small and medium enterprises. So this is a verifiable model of economic empowerment for women, which I think can really help us to achieve our economic goals. Thirdly, sir, doubling farmers' income. Sir, the government had spoken about doubling farmers' income by 2022. It has not happened. Sir, in Odisha, we have already doubled farmers' income a couple of years ago. In fact, we have received the Krishi Karman Award many times by Government of India, which showcases the importance and impetus that we have given to farmers. And sir, talking of inclusive growth, sir, there was a wide gap between the per capita income, national per capita income, and the state's per capita income in the year 2020-21. Today, sir, that has been drastically gapped. The gap has been drastically bridged. And today, sir, we are almost at par with the national per capita income. And sir, I'll give you statistics. Sir, the development expenditure of Odisha has increased more than 20 times over the last 20 years. Sir, more than 20 times over 2 decades. This is a huge, huge, humongous
spent on development expenditure, which is shown in all our indicators and parameters. Sir, I'll come to the focus on education, innovation, R&D. Sir, way back in the 60s, Kothari Commission had recommended that we spend 6% of our GDP on education. We are nowhere close, sir, today. Sir, I will compliment the government of the day and particularly Honorable Education Minister that in this year's budget, the budget estimate of education is 1,13,000 crore roughly, which is 13% increase over the revised estimate of 22-23. Definitely, sir, this is the highest increase in outlay in expenditure over the RE of the previous year. But, sir, it's still not enough. It's only 2.8% of the budget, of our union budget. In contrast, sir, in Odisha, 30,000 crore has been earmarked for the budget, for education in this year's budget, which is 12.3% of the total budget outlay of the state. 12.3% of the total budget outlay of the state is for education, sir. Sir, I think inspiration can be drawn by the union government from Odisha on this. Sir, I'm extremely passionate about education, but I was sorry and sad to note that in her budget speech, the Honorable Finance Minister spoke about 7 priorities, what she called Saptarishis. But education was not one of the priorities or Saptarishis. And we all know, sir, the foundation of any nation is education. No nation can progress economically, socially, or otherwise without focusing on education. So this is why I urge again the government to focus on education. Sir, I'll come to PM Poshan. Sir, Honorable Member Chidambaram spoke about, sir, child malnutrition. He gave some numbers: 16% undernourished, 35% stunted. These are numbers. Sir, again, I'm sad to note that the budget estimate for 23-24 for PM Poshan is 9% less than the RE, the revised estimate of 22-23. Sir, this will definitely reflect in poor learning outcomes and education outcomes. Sir, I'll come to, sir, R&D. Sir, Honorable PM has often spoken about India becoming a $1 trillion digital economy, which will be roughly 20% of our economy when we become a $5 trillion economy. But, sir, tell me, sir, which nation can become a digital economy without focusing on R&D? And today we spend only 0.7% of our GDP on R&D. Comparable numbers, sir: Israel 4.9, US 4.5, sorry, US 3, South Korea 4.5, China roughly 2. We are only at 0.7. Sir, I compliment the government. I laud them because they brought in the Anusandhan National Research Foundation bill. And Prime Minister has often spoken about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. But, sir, we need to really focus on Anusandhan or research if we want to become a developed economy in the next couple of decades, at least. And, sir, finally, sir, I'll come to the focus on MSMEs. Sir, we are growing, no doubt, but it is not a job-led growth. Sir, I'm afraid that is becoming a job-less growth. Sir, that is because, sir, our focus on MSMEs is not to the extent what it should be. Sir, today MSMEs are crying for capital. They do not have access to capital. Sir, there are statistics, sir, that if the loan amount is less than 1 crore, then the default is roughly 1%. But if the loan amount is more than 100 crore, then the default is over 40%, sir. So who takes loans over 100 crores? It's the large enterprises. But the MSMEs take loans in 1 crore and their default rate is less than 1%. But still, sir, we have not done justice to our MSMEs by giving them access to capital, by giving them access to technology. So, sir, I'll again urge the government, sir, MSMEs are the job creators of our country. They create wealth for the nation. They contribute 30% to our GDP. So they roughly create 123 million jobs. So that is roughly 12 crore jobs. Still, we are neglecting our MSMEs. Sir, if we have to really focus on the economy, then we need to focus on the MSMEs because, sir, and sir, finally, sir, since you have, sir, since my time is over, sir, I'll just conclude by saying that, sir, India, that is Bharat, is a union of states. So if we have to grow socially and economically, then we need to take the states along. And this is why, sir, my Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, has always believed in the philosophy of cooperative federalism. Sir, for him, empowering the 4.5 crore Odias socially and economically has been his highest duty. And this is why, sir, he has been appealing in various forums through the parliament and otherwise that, sir, we need support from the government of India Honorable to better our elegant city, to better our
relevancy Thank to you. have, sir, more funds which we are Please rightly. conclude. Please conclude. Sir, I'm Thank you. concluding, sir. So this is what. Thank Sir, you. the Honorable PM has spoken about Purvodaya, which is the rise of the East. Sir, how can we have Purvodaya unless, sir, states like Odisha are supported economically by Government of India by, sir, giving us the funds that are due to us, Thank you. by, sir, giving us the teledensity, the highways, the banking Thank you. facilities that we, sir, Thank you. badly need. Thank you, sir. you. माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी जी. Deputy Chairman, sir, thank you very much. And I also thank my party president and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Vaya Jagan Mohan Reddy Garu, for giving me an opportunity to speak on this particular subject, sir. Sir, for the last 10 years, India has been on the brink of massive economic transformation, which the opposition is not in a position to realize. Sir, for the last 10 years, again, we have grown from being 10th highest GDP to 5th highest GDP in the world, which my colleague, Honorable former Finance Minister Chidambaram couldn't realize it. Sir, in the next 5 years, under the leadership of Modi ji, we are poised to become third largest economy in the world, crossing 5 trillion mark. Please, please. माननीय जयराम जी बैठकर बात नहीं. Please, you speak Sir, to the sir, chair. Deputy Chairman, sir, India continues to retain its fast-growing economy status even in the face of global economic slowdown. And we have faced the COVID situation. Even during COVID situation, there is no economic stride, and it continues to grow in the economy. Sir, last year, our GDP growth stood at massive 7.2%, which was twice the average of emerging market economies. And our Honorable former Finance Minister extensively spoke about the GDP. And he was all along talking negative about the GDP, and he couldn't realize that there is a growth. And currently, we have surpassed the market expectations and registered a 7.6% growth during second quarter of this current 2023-24. Sir, and coming to the tax collections, which the opposition has to realize the importance. There is a significant growth in the tax collections that has become the norm, and this has fueled the economic growth, sir. Sir, within 10 years, the direct tax collections have increased by 160%, and from 6.4 lakh crore in 2013-14 to 16.6 lakh crore in financial year 2022-23. Sir, this year, this 6 months from April to September, tax collections increased by 18%. Sir, till now, the GST collections, now up to this direct taxes and then indirect taxes, till now, GST collections for this financial year stands at 13.3 lakh crore, averaging 1.66 lakh crore monthly. This is whopping 12% hike over the last year. The increase in tax collections without substantial tax hikes goes to show that the government efficiency in improving our tax compliance and expanding the tax base. Sir, even there is no applaud from the treasury benches. Opposition, I'm very sure they will not applaud. Sir, come to the digital payments. India continues to dominate the digital payment landscape. Sir, we recorded 89 million digital transactions in 2022, which is more than 4 leading countries combined together. Sir, this accounted almost half of the global real-time payments. And sir, and I also should, up to this, it's all positive points, sir. From now, I have to tell the negative points also, and at least to satisfy my friend Jairam Ramesh. Sir, we must not be complacent with our achievements. And sir, many issues continue to hinder the India's economic growth, sir. Sir, the first I would like to point out among the negatives is depreciating rupee.
which is very, very alarming. Sir, rupee was worst performing Asian currency in 2022. Sir, for the first time ever, the value of rupee crossed 80 against the dollar. Currently, it stands at 83.4, which is very, very alarming. Sir, it is successively, the rupee is depreciating year after year from minus 8.5% in 2018 and minus 10% in 2022. Sir, depreciation of rupee has got a significant impact on the overall development of the country, sir. Sir, depreciation of rupee has a direct impact on the manufacturing sector since India is a net importer of raw materials and fuel. These two are very important import because we completely depend on the fuel imports, sir. Manufacturing growth has already started showing the signs of stress and has slowed significantly this fiscal year. Sir, as per RBI, every 5% fall in the value of the rupee, inflation increases by 15%, 15 basis points, that is 0.15%. Sir, foreign investors, this has another effect of depreciating the rupee, sir. Foreign investors have pulled out 18 billion from Indian markets, more than 12 billion sell-off during 2008 global recessions. Sir, the next issue which I would like to bring to your kind notice is the reality remains that top 10% of the Indian population holds more than 60% of the country's wealth, while the bottom 15% of the population has only 6% of the wealth, sir. Even though the per capita income has more than doubled, that is 1.97 lakh since 2014, India ranks 142nd among 197 countries in terms of per capita income. The last point, sir, which I would like to bring to your notice is widening trade deficit, which is again alarming. Sir, India's overall trade deficit reached 122 billion in financial year 2022-23 compared to $82 billion in the previous year. So the government data indicates that India's trade deficit hit a record high in the month of October, and more alarming is, all the more concerning is India's widening trade deficit with China, and historical high of 83 billion in 2022, and is expected to cross 100 billion mark in 2023 only towards China, sir, from China. Sir, in conclusion, we cannot afford to be complacent, and we should take the necessary steps. I request the Honorable Finance Minister, though there are positive aspects, there are also negative aspects in this economic growth. So I request the Honorable Finance Minister to address all these issues and make the economy more strengthened. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, माननीय वी विजय साई रेड्डी जी. माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी. माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज सुबह जब पता चला कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी पूरी बातचीत टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और वगैरह वगैरह की चीजों में रहेगी. अर्थव्यवस्था का वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है. गरीब की, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी. मैं सिर्फ, और हाँ, बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता. सर, मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह. सर, माननीय उपसभापति जी, सुधांशु जी जब बोल रहे थे, तालियां बज रही थी, सत्ता पक्ष बजती भी हैं. अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो. तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी, तो मुझे लगा
कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं? सर, कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल स्वाति नारायण की। बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ। मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र, उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए, क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है। और तब प्रधानमंत्री जी, पुनः ले जाऊंगा 14 में बिहार गए थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे, हाजीपुर, दरभंगा, पटना। सर, बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष। बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। क्योंकि अगर आप इस किताब का विश्लेषण करें, सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा पहलू कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धृत किया गया है, नॉर्थ साउथ डिवाइड के संदर्भ में भी। और ये पुरानी बात है सर, एफडीआई को ही देखिए कि नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिए से देखिए। जो शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी, तेजस्वी जी ने की, आप हैंड होल्डिंग करिए और स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी चीज सर, अगर मनरेगा में रूरल डिमांड बढ़ रहा है तो रूरल डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करिए। उसको एक्नॉलेज किए बगैर बात नहीं बनेगी। उसको डिनाल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाए। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने कई वर्षों से काम नहीं किया। आप आंकड़ों के बारे में तो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बकटू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे। अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है, कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं, इनकी तो मेथोडोलॉजी खराब है। साहब नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। हमें एड्रेस करना होगा। आपको असल में लग गया सर, बस 1 मिनट लूंगा माफी के साथ। सर, आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। वेल्थ टैक्स को लेकर के, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर मैंने कहा, वेल्थ टैक्स 16 में आपने अबॉलिश कर दिया। किसानों के बारे में सर मैं कहता हूं, आप कहते हैं शेयर बाजार उछल रहा है, बड़ी तारीफ होती है। सर, शेयर बाजार उछले और एक किसान आत्महत्या कर ले, एक युवा बेरोजगार आत्महत्या कर ले, तो आप किस चीज को कहेंगे सर? और कुछ नहीं कहना चाहता। हाशिए के समूहों में पॉवर्टी की जो परिस्थिति है, आप बिहार का डेटा देखिए। आखिरी सर, एक सुधांशु जी बड़ी अच्छी चीजें बता गए, हमें तो लगा कि हम तो बेकार परेशानी है गरीबी से, भुखमरी से। 30 सेकंड सर। तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रवर को कहता हूं, जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? जय हिंद सर। थैंक यू।
धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय श्री एलामारम करीम जी। Thank you, sir. The real state of our economy concerning around the people will be clearly understood by the latest RBI report, which says the household's financial assets, including bank deposits and cash equity investment, fell down sharply to 5.1% of the GDP in the fiscal year ended in the March 2023. See, on the other hand, the household debt increased 5.8% of the GDP in the financial year 2023, which is the second highest annual increase since independence. Recent RBI data also reveals that bank, financial institution credit to institutions bar business marked a decline, while personal loan portfolio has increased in volume during in the current quarter, which clearly signals further slowing down of the economy along with the rise in the people's indebtedness and resulted distress. Sir, in addition to these technical issues, there are broader concerns about the overall economic direction of the country. Tax concession and incentives are given to the rich corporates, are widening the gap between the two Indias, the rich and the poor. Real income of the top 1%, the cronies of Modi government, rose by 30% from 7.9 lakh crores in 2019 to 10.2 lakh crores in 2022. While the real income of the lowest 25%, who are shouting slogans for you, by the 11% from rupees 3.8 lakh crores to 3.4 lakh crores. Sir, a relentless propaganda continues to boost the Indian economy's resurgence. The recent G20 summit was used to project India as an emerging economic powerhouse in the world. But the truth is that India has the lowest per capita GDP among the G20 countries. That was hidden. Ranks the lowest in terms of human development indices and records the lowest labor force participation rate, Chidambaram told you, reflecting the very high level of unemployment. The continued decline in the people's purchasing power is impeding the economic growth as this leading declining levels of domestic demand. This in turn leads to declining levels of investments. This means potentially further declining levels of employment guarantee. New proposals for investment in the economy have rapidly declined. Over the last year, 72.5% in government sector and 79% in private investments. Sir, massive propaganda bliss is launched over the grand success of Make in India. That was the slogan from 2014. Its target for manufacturing sector growth over this decade was 12.14%. The reality is that since 2013-14, this averaged only 5.9% per annum. The tall claim where it has gone. The share of the manufacturing GDP was targeted to reach 25%. This, however, remained stagnant at around 16.4%. But when 2011 and 11-12 and 21-22, jobs in manufacturing sector declined from 12.6% to 11.6%. I am concluding, sir. Deepening rural distress is reflected in the demand for jobs under MNREGS. Last year, this grew by 15.3%, and compared to 2019-20, this grew by 29.4%. But unluckily, the allocation for MNREGS drastically cut down in the last budget. Fresh evidence that have emerged about the Adani Group manipulation
That is also a part of this economic policy. Manipulation of stock prices of its companies calls for a serious probe. The final Financial Times and Guardian Already have time based is on over. inputs from the organized crime and Alaram corruption. Karim 1 ji, minute. your time is over already. A report project revealed Please how conclude. to close associates of such companies Conclude, please. I'm and buy calling. millions of dollars of shares in Adani Thank you. companies. Thank Sir, you. these are the affairs of the Indian economy. The tall claim has no truth. I conclude with Thank this. you. माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी. Thank you, Deputy Chairman, sir. When we are crossing a river in a boat, if there is a hole in the boat and the water starts trickling in, taking a mug or a tumbler and pouring the water out of the boat is not the solution, sir. Plugging the hole needs to be the solution. सर, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी के बारे में आंकड़ा बहुत सारे हैं. Important thing is plugging the hole, sir. I want to give you two, three examples. Most of my life, I was opposing the Congress policies, being in the Janata Party, Janata Dal Parivar, and later being part of the NDA. But I want to point out to you, sir, in 1985, the then government of Rajiv Gandhi had launched the oilseed technology mission, because of which by 1993-94, we were almost self-sufficient in edible oil. Subsequently, governments started reducing import tariffs, as a result of which cheap edible oil started flooding the Indian market, and India became dependent on import of edible oil, sir. Sir, this has become a pretext for the government to give permission to genetically modified mustard. So giving permission to GM crops is not plugging the hole, sir. Sir, इसी सदन में कल 6 दिसंबर है. 6 दिसंबर 2012 को तत्कालीन लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्टी ब्रांड रिटेल के डिबेट के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश से चीप गुड्स भारत आने के बारे में उन्होंने कहा था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी उन्होंने कहा था. अभी यहाँ पर साथी अशोक मित्तल और कन्नीमोली जी भी चाइना के बारे में जिक्र कर रहे थे. My information, sir, is that millions of people, including Falun Dafa practitioners, Uyghur Muslims in Xinjiang, are subjected to forced labor in Chinese prisons. And because of the violation of human rights, labor laws, and environment laws, our neighbor is able to manufacture cheap goods, which makes us less competitive. Illegal organ trade of innocent prisoners like Falun Dafa, Uyghur Muslims are flourishing business there. So long as we do not plug the hole by starting a campaign to stop human rights violation, labor law violation, environment law violation inside China, I feel it is difficult for India's manufacturing sector to improve. Sir, finally, देश में जातियां हार्ड रियलिटी है, सर. देश में कई सारे पिछड़े जातियों को आरक्षण के बावजूद विकास का फायदा पहुंचा नहीं है. इसलिए नीतीश कुमार का नेतृत्व का मेरा पार्टी के सरकार बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस लागू किया है. जब तक देश में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करते हैं, तब तक सरकार का बनाया हुआ पॉलिसीज का फायदा कई सारे जातियों को नहीं पहुंचेगी. Sir, hence, by ordering a caste-based census, we need to plug the hole. And finally, sir, I also request the government to give special status to Bihar. Thank you. Thank you. धन्यवाद माननीय अनिल हेगड़े जी. माननीय अब्दुल वहाब जी. माननीय अब्दुल वहाब जी. Yes, sir. Thank you very much. 3 minutes, sir. The occasion to talk. Mr. Chidambaram, from Chidambaram to all opposition parties, were telling about the
gravity of our Indian economy, how it is going on. No doubt, as our comrades tells, this our GDP is grown to the level which we never expected. Ultimately, the GDP per person, where it is, that was the only question I want to ask to the government of India. There are a lot of abhayans. Prime Minister Kanname, this name, that name, and removed all the other name. But ultimately, it is getting to the really needy people. I am working mainly on tribal areas. There, a lot of projects are there, lot of money also there. But it is not coming down because of lot of hurdles. In the same way, Indian economy, everybody is saying that, okay, we are this level, that level, but our Vijay Sir Reddy, lately he came to the point. Before he has to. It is compulsion, not because of his intention. Compulsion, they have to have this one, this stand. Almost all parties, everybody is threatened. But what our government is saying, okay, semi-final over. All the 10 matches in, you see this one, Indian matches against the World Cup, everything we gave with, but at last what happened in Ahmedabad Modi Stadium? He was there with the blue jackets, our Prime Minister. We are also behind him. What happened? That is what going to happen in 2024. It is not be a hat-trick. Unless and until, maybe they can win, unless and until they have to see the real problem. Not this $1 trillion. It is coming to, most of the money is coming to me also, just like me people, little, 1 or 5%, including that one maybe. But it is not going to the real people. That 80 crores. Our Manoj was telling clearly. So please spend some money or get some money from wherever it is and pump to the, in Manrega or whatever it is, which is helping people, real people, not the big corporates. I know when I am starting, if I am telling Adani, you will put the bill, stop. Everybody is telling about Adani or other, then it is, time is over. I hope, I don't know. Now, just Yes, your time is over. 3 minutes already. Okay. That is the thing. 3 minutes. When we are please. telling about the real point, it will be coming. Anyway, everybody, you are giving 1 minute. Give me that 1 minute, just a minute only. Please, Because please. my request Conclude. is, whatever our comrades say, this much crores and all, our Tamil Nadu people asking 5,000 crores only because of flood, that situation. But Kerala government, the dues in different areas is more than 5,000 crores. Release something, some little thing. Thank That you. is where Thank you. my request. Thank you very much. Thank you, Abdullah. And for the great performance.